अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। ये आज हमारा EDS का 10वां लेक्चर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के हवाले से। तो म्यूनसिपल ऑफिसर की टेस्ट में या टाउन ऑफिसर की टेस्ट में या जो ADFIA की टेस्ट आ रही हैं उनमें ये एक्सपेक्टेड है कि भाई इनमें से भी काफ़ी वो सवाल दे सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, लॉक जॉ difficulty in opening the mouth is a symptom of tetanus. Virus causes measles. Which of the following pairs is incorrect? Poliomyelitis monkey, ये incorrect है। बाकी ये rabies dog, pluck rat, tapeworm pig. Which of the following is a fungal disease? Ringworm is a fungal disease. Bronchitis is a disease of which of the following organ? Respiratory tract. Acquired immunodeficiency syndrome एड्स, ये याद कर लें, इसका शॉर्ट फॉर्म है एड्स का। Acquired immunodeficiency syndrome is caused by वायरस। ये आ सकता है कि भाई एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या है। Deficiency of iron in human diet causes anemia. Trachoma is a disease of eyes. ये SPSC के पास्ट पेपर में ये सवालात आया था कि भाई ट्राकोमा जो है इज अ डिजीज ऑफ आइज। मम्प्स इज अ डिजीज काज्ड बाय वायरस। रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ बोन्स। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑटोप्सी इज कनेक्टेड विथ पोस्टमार्टम। क्लोरिया इज काज्ड बाय वाइब्रियो क्लोरिया। Heart attack is caused due to cholesterol. Malaria is a disease which affects the spleen. Which of the following disease is caused by virus? Smallpox. In human beings, infection of Plasmodium causes malaria. Which of the following can cause cancer as well as cure it depending upon its intensity and use? Ionized radiation. DPT vaccine does not give protection to child from polio. Leukemia is a disease of blood cells. Which of the following is a waterborne disease? Cholera. The antibiotic penicillin is obtained from fungus. Antibodies are protein. The disease in which bronchial tubes becomes narrow due to spasms of bronchial muscles is called asthma. Which of the following medicines is administered to patient suffering from diabetes? Insulin. Which of the following is not a vaccine preventable disease? Asthma. Which disease mainly affects children under 5 and remains endemic in only 2 countries? Polio. The biggest challenge to improving global vaccine coverages are all of these: limited resources, poor management and health systems, competing health priorities. An attenuated vaccine is composed of living weakened microorganisms. Vaccines are available for all of the following except hepatitis C. ए की भी मौजूद होती हैं, बी की भी, टेटनस की भी, सी की नहीं होती है।
तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर था हमारा, 30 क्वेश्चन से सिर्फ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।